ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंडाइसिस के पास्ट पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2002। तो जो सवाल इंडाइसिस का आता रहेगा हम सॉल्व करते रहेंगे उसको। इट सेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9 पावर 1 अपॉन 2 प्लस 9 पावर 0. So 9 power 1 over 2 it is basically equals to 3, and 9 power 0 it is equals to 1. That will be 3 plus 1 is equals to 4. तो आपके पास पहले का आंसर आ जाएगा सिंपल 4। उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ 2 पावर माइनस 3 इज 2 पावर n. रेसिप्रोकल ऑफ 2 पावर माइनस 3 is 2 power n. So if you apply the rule of indices here, that will be 2 power minus n, and n is equals to 3. So you got your answer, n is equals to 3. 4 part A, although it is not from indices, but we हम कर लेते हैं. 16 minus 8 divided by 2. So that will be 16 minus 8 divided by 2. At first we need to divide it. So that will be 16 minus 8 divided by 2, it is equals to 4. And 16 minus 4, it is equals to 12. ये आपके पास आंसर आ गया सिंपल 12. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. इट इज़ गिवन दैट 5 पावर माइनस 2 इंटू 5 पावर के इक्वल्स टू 1. आपके पास लिखा है 5 पावर माइनस 2 इंटू 5 पावर के इक्वल्स टू 1. Since we have same bases and they are multiplying, power needs to be added, so that will be minus 2 plus k is equals to. Now instead of 5, अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 to the power 0, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि anything with 0 power is 1. बट फ़ायदा ये हुआ कि we have same bases on both sides, so we can equate powers. So minus 2 plus k is equals to 0, and you got the value for k, it is equals to 2. It is given that cube root for part B, cube root of 7 is equals to 7 to the power n. Now that is in radical form. To convert radical into index form, it is 7 to the power 1 over 3 is equals to 7 to the power m. So you got the value for m, it's 1 over 3, and k is 2. Next one. Now these parts are from in standard form, but हम लोग अभी सिर्फ इंडाइस पे फोकस कर रहे हैं. It's November 03 paper 1. First part, it says that 3 power a divided by 3 power 5 equals to 27. Bases are same on left side, they are dividing, that means power need to be subtracted, so that will be a minus 5 is equals to 27 is 3 to the power cube. Now you have same bases on both sides, power needs to be equated, so a minus 5 equals to 3, and you got the value of a, that is equals to 8. So that is your first part answer, 8. After that, second part B. It says 125 to the power b is equals to 5. Again you have power in terms of alphabets, so you need to make the basis same. So 125 is basically 5 power 3, and b remain as it is equals to 5 with the power 1. Bases are same, equate powers, so 3b is equals to 1, and you got b equals to 1 over 3. Lastly, it says 10 to the power c is equals to 0.001. Now I can write it 10 to the power c is equals to 0.001. If you convert it into fraction form, so that will be 1 divided by 1/8. Alright, how many numbers are there? There are 3 numbers after the decimals, that means there must be 3 zeros. So that's how you can convert a decimal into a fraction. And 1 over 1000, you can say that it will be 1 over 10 to the power q, and it's 10 to the power c. If you shift 10 power cube in the numerator, it will be 10 to the power c is equals to 10 to the power minus 3. So you got the value of c, it is negative 3. That is your answer for c part. Simplify. It says 3x cube with a whole square. So 3 square is 9, and x to the power 6. In the next part, it says that 16 power minus 1 upon 2 into k is equals to 1. So 16 is basically 4 to the power 2, and it's minus 1 over 2 into k equals to 1. You can simplify the powers, so that will be 4 to the power minus 1 into k equals to 1. 4 to the power minus 1 is 1 over 4 into k equals to 1, and you got the value for k, that is equals to 4.
Towards the next one. Alright, 9 part B. It says 1 upon 3 to the power minus 2. Whenever you have negative powers, you need to reciprocate the function, so that will be 3 divided by 1 and the power will be 2. So 3 square is 9 and that is your answer. Next one. 16 part C. It says evaluate a to the power 2 over 3. So if I'm writing 8 to the power 2 upon 3 in the form of 2 power cube, that makes it 8. The benefit is 3 and 3 cancel, and now you got 2 to the power 4, that is 2 to the power 2 is equals to 4. That is your answer. Next one. 15. Evaluate 5 power 2 plus 5 power 0. So 5 power 2 is 25 and anything with 0 power is 1. So you got 26. Next one. 1 upon x power minus 2. Again you got negative power. So you need to reciprocate the function, that will be x upon 1 with the power 2 and it is x power 2. It says x power 6 upon 2. We know that power multiplies with power. So that will be 6 upon 2 and x is cube. That is your answer. After that, part C. 3 power 0 into 4 power 3 upon 2. 3 power 0 it's 1 and it's written that 4 to the power 3 over 2. Instead of 4 to the power 3 over 2. 3 over 2. Instead of 4, I can say that it's 2 power 2. Power 2 and power 2 cancel, so 2 power cube is 8. Answer. Next one. 17 power 0, that is equals to 1. 4 to the power 5 upon 2, it will be 2 square whole power 5 upon 2. As 2 square is 4. 2 and 2 cancel and 2 power 5, it is equals to 32. Lastly, 0.2 to the power minus 2. So firstly, I will shift the decimal into fraction. So 0.2 means is 2 divided by 10, right? So 2 divided by 10, it is equals to 1 divided by 5 if you simplify, and the power is minus 2. 1 upon 5. Since the power is negative, you need to flip the function. So that will be 5 over 1 with the power, it will be 2. And 5 square is 25. That is your answer. Next one. These all are standard form, so I will cover this topic in the next video. इस वीडियो में सिर्फ indices. So 9 power 0, it is equals to 1. 9 power minus 2. So when we have negative powers, we always flip the function. That will be 1 upon 9 square and it is 1 over 81. 9 to the power 3 upon 2, it says 9 to the power 3 over 2. Instead of 9, I can say that it's 3 power 2. 2 and 2 cancel, so it will be 3 power cube and that is 27. Answer. Next one. 4 to the power 3 upon 2. 4 to the power 3 divided by 2. 4 is what? 4 is 2 power 2. 2 and 2 cancel, so 2 cube is 8. Next one. Question number 26. It's June 2010, paper 1-2. 9 power 1 is 9 and 9 power 0 is 1, so that will be 10. Next, 1 upon 9 to the power 1 upon 2. 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा. 9 to the power 1 upon 2, alright, is equals to 1 divided by 9 to the power 1 upon 2. 9 is what? 9 is 3 power 2. 2 and 2 cancels, so that will be 1 over 3. After that, 4 power 0 is 1. 4 power 1 is 4. It is equals to 5. 1 upon 4 power negative. So you need to flip that function. So that will be 4 upon 1 and power is 2. It is equals to 16. Next one. Five power 0 is 1 minus 5 power minus 1. It will be 1 upon 5. Now you need to take LCM here. LCM is 5. It will be 5 minus 1 and the answer is 4 over 5. Part B, simplify. Whole power is like a sunlight. So 5 power square is 25. X to the power 3 2s are 6. Again, you need to apply that whole power on both numerator and denominator. So it will be 16 to the power 1 upon 2 divided by n power 16 and whole power 1 upon 2. 16 power 1 upon 2, or you can say that 16 root is 4.
and it will be 2 ones are 2 8s are, so that leads to n to the power 8. 8 power 2 upon 3. I'm writing the form in this pattern, 8 power 2 upon 3, and 8 is what? 8 is 2 power cube, so 3 and 3 cancel, 2 square is 4. You have negative power, so you need to flip that function. So 6 upon 1 with the power 2, and 6 square is 36. Next one. Alright. Evaluate. It's June 2011. Again, you got negative power, so you need to flip your number. 4 upon 1 with the power 2, that leads to 16. It says 64 to the power 2 over 3. Instead of 64, I can say that it's 4 power cube. 3 and 3 cancel, 4 square is 16. After that, it says simplify. Whole power is 1 upon 2. I won't solve the power for in the first step. What I will do, I will solve in the bracket. Now, you have 2x, x square in the numerator and x4 in the denominator. हमारे पास x की बड़ी पावर का है तो डिनोमिनेटर में, तो मैंने कहा भाई ये आ गया x पावर 4, ठीक है. अब ये 2 क्योंकि डिवाइड हो रही है तो डिवाइडिंग पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट होती है. जब ये 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2. सही है ना. बेसिस आर सेम, पावर्स बेसिस आर सेम और डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं. ये वाली प्रॉपर्टी है. अच्छा, y की हाईएस्ट पावर कहाँ है? y की हाई पावर न्यूमरेटर में, तो y आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है. और नीचे पावर 1 है y की, तो 1 ये ऊपर जाएगा, तो दैट विल बी -1. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, फिर होल पावर सॉल्व करूँगा. ये आ जाएगा मेरे पास 4y टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 एंड होल पावर 1 अपॉन 2. अब ये 1 अपॉन 2 सब पर अप्लाई होगी, तो 4 टू द पावर 1 अपॉन 2, y पावर 8 होल पावर 1 अपॉन 2 and x power 2 and whole power 1 upon 2. So 4 power 1 upon 2, it's 2. Y to the power 2 4s are 8. It will be simplified and x will be remain x. So that is your answer. Clear hai? So it's better to simplify the bracket first and then apply the property. Next one. 3a 4 power square. So 3 square is 9 and 8 to the power 4 2s are 8. Again you got negative power, so it will be 4 to the power 2, it is equals to 60. X cube is equals to 27, so it says x cube is equals to anything with 0 power is 1, right? Or if I write in the form of that x cube is equals to 1 cube, does it make any difference? So the answer is no. 1 cube, 1 square, 1 power 4, anything with the power 1 is equals to 1. So you got x is equals to 1. Next one, 12 to the power 1 upon 2 and 3 to the power 3 upon 2. It will be, it says 12 to the power 1 upon 2 divided by 3 to the power 3 upon 2, right? Now what is 12? 12 is basically 4 multiplied by 3, right? So it means that we have 4 whole power सब पर apply होगी, power 1 upon 2 into 3 whole power 1 upon 2 divided by 3 to the power 3 upon 2, right? 4 to the power 1 upon 2, it is equals to 2. Now in the numerator we have 3 to the power 1 upon 2, right? These two bases are same and they are dividing, so power need to be subtracted. So 1 upon 2 minus 3 upon 2. 2 remain as it is. 1 minus 3, it will be 3 to the power minus 2 divided by 2. That will be 2 into 3 to the power minus 1. We cannot leave our answer in the negative form, so you need to apply the flip property, so that will be 2 over 3. That is your answer. 4 to the power 0 is 1 and minus, you can't solve the negative power, so first we need to flip it, so that will be 4 power 2. It is 1 minus 1 upon 16. You can take LCM here, that is 16. It will be 16 minus 1, so the answer is 15 over 16. 2 ka cube, it's 8 and x to the power 2 3s are 6. Write 8 cube in the form of k. So you got 8 cube. I need to write it in the form of 2. So instead of 8 cube, I can say that power cube. And what is 8? 8 is 2 power 3. So power multiplies with the power, so that will be 2 power 9.
and we need to show that in the form of 2 power k. So basically we got the answer for k, and that is equals to 9. Alright, after that evaluate 16 power 3 upon 2. It says 16 power 3 upon 2. What is 16? 16 is 4 power 2. 2 and 2 cancel, so you got 4 to the power cube, that is equals to 64. Next one. 5 power 1 is 5 and 5 power 0 is 1, so that is equals to 6. You got negative power here, so you need to flip the function. 3 upon 4 with the power 2, it is equals to 9 over 16. Lastly, whole power is like a sunlight, सबको मिलेगी, so 2 cube is 8 and x power 2 3s are 6. 3 power 0 is 1 plus 3 power 1 is 3, it is equals to 4. Next, 3a divided by 3 4. So you got same bases, right? If the bases are same and they are dividing, power needs to be subtracted. A minus 4 equals to 3 square. Now bases are same, equate the powers. A minus 4 equals to 2 and you got a equal to 6. 8 power b. 8 power b equals to 2. So you need to make the bases same. So 8 is what? 8 is 2 power 3. So that will be 2 power 3b is equals to 2 power 1. And equate powers, so 3b is equals to 1 and b equals to 1 over 3. That is your answer. After that, 5 power 0 is 1, 5 power 2 is 25, that is equals to 26. 36 1 upon 2, it will be 36 1 upon 2. What is 36? Is 6 square. 2 and 2 cancel, so you got 6. 2 power 2 upon 3 and whole power 6. You can simplify powers. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So that will be 2, 2 2s are 4. So 2 power 4 is 16. Next, 1 upon 3 power k equals to 9. So 1 की power कुछ भी हो 1 ही रहता है, divided by 3 power k equals to 9. Alright. If I shift that 3 power k in the numerator, it will be 3 power minus k is equals to 9 is what? 9 is 3 power 2. Since bases are same, we can equate powers, so minus k is equals to 2 and k is equals to minus 2. That will be your answer. Evaluate 4 power minus 2, it will be 1 upon 4 power 2 and you got 1 upon 16. Again you got a bracket with a whole power 1 upon 2. अभी हम पावर सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। x की बड़ी पावर डिनोमिनेटर में है, तो x हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा 3, ऊपर वाला 1 नीचे रख के हो जाएगा -1। सिमिलरली y की बड़ी पावर हमारे पास है न्यूमिनेटर में 6, 2 ऊपर जाके हो जाएगा -2। ये सिंप्लीफाई किया, सो 9 टू द पावर y 6 minus 2 4 and x to the power 3 minus 1 2 and whole power is 1 upon 2. Now you need to apply that 1 upon 2 on the whole bracket. तो 9 पर आएगा तो ये हो जाएगा 9 to the power 1 upon 2 y power 4 whole power 1 upon 2 and x power 2 and whole power 1 upon 2. So 9 power 1 upon 2 it's 3 y square divided by x. ये बना आपका आंसर. Alright, next one. अभी सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ इंडाइसिस पे फोकस कर रहे हैं. 3 स्क्वायर अपॉन 2 होल पावर -2. सबसे पहले आपने होल पावर को पॉजिटिव करना है, दैट मीन्स यू नीड टू फ्लिप योर फ्रैक्शन. तो ये आपकी पावर हो गई पॉजिटिव. सो 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड होल पावर 2. सो 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 9 स्क्वायर इज़ 81. ये आपका आंसर आ गया. ऑलराइट, चलें जी आगे देखते हैं. 5 upon 3 power minus 2, it will be 3 upon 5 with the power 2 and that is 9 over 25. 9 upon t power 6 power 1 upon 2. So it will be 9 power 1 upon 2 divided by t power 6 whole power 1 upon 2. 9 power 1 upon 2 is 3 and 2, t power cube. 2 1s are and 2 3s are. Next, 2x cube y upon 6xy square. फर्स्ट वी कैन सिंप्लीफाई द नंबर, सो 2 1s are and 2 3s are. तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1 upon 3.
अब x की बड़ी पावर का है न्यूमरेटर में, तो x ऊपर रहेगा, ऊपर पावर 3 है, नीचे वाला 1 ऊपर जाके हो जाएगा -1। y की बड़ी पावर डिनोमिनेटर में, दैट इज़ 2, ऊपर वाला 1 नीचे आके हो जाएगा -1। सो यू गॉट 1/3 x पावर 2 एंड y। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, 2 इंटू 5 पावर p इक्वल्स टू 250। अब यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पावर सेम नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे के डिवाइड हो जाएगा। वी हैव 2 5 पावर p इक्वल्स टू 250। 2 वहाँ के डिवाइड कर देंगे हम, तो 5 पावर p इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाई 2। यू गॉट 5 पावर p इक्वल्स टू 125। 5 power p equals to 5 power 3. 125 is 5 power cube, so p equals to 3. Answer. Next one. It says 1 divided by x minus 5. So 1 divided by x minus 5. अगर ये x minus 5 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? x power 5. Answer. Next. 3a upon 4, 3a upon 4 डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो आपका फ्रैक्शन फ्लिप हो जाता है, तो दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर। 4 1s आर, 4 2s आर, a से a की पावर गई, 3 1s आर, 3 3s आर, सो यू गॉट 2/3a। ये बना आपका आंसर। नेक्स्ट वन। ऑलराइट, जून 2016, 5x7y डिवाइडेड बाय 15। पहले नंबर को देख लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं इसको, 5x7y डिवाइडेड बाय 15x³ y4। नंबर की बात करते हैं तो 5 1s आर 5, 5 3s आर 15, तो नंबर आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ गया 3। x की बड़ी पावर न्यूमरेटर में, दैट इज़ x पावर 7, नीचे वाला 3 ऊपर जाके हो जाएगा -3। y की बड़ी पावर नीचे डिनोमिनेटर में 4, 1 नीचे आके हो जाएगा -1। सो यू गॉट x पावर 7 - 3 4 डिवाइडेड बाई 3 y टू द पावर q। नेक्स्ट वन, 4t² / v4, पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शन को फ्लिप कर दें आप, तो ये हो जाएगा v टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4t², और अब पावर आएगी 1/2। सबसे पहला काम पावर पॉजिटिव कर दी, अब पावर सब पर अप्लाई करेंगे। सो v टू द पावर 4 एंड होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 1/2 एंड t² टू द पावर 1/2। अब इसका आंसर आएगा 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4, सो ये आ गया v² डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/2 इज़ 2, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया आपके पास t। सिंपल। नेक्स्ट वन, 3² it's 9, 3 power 1 it's 3, and 3 power 0 it's 1, so 9 + 1 10 + 3 13। नेगेटिव पावर, सबसे पहला काम फ्रैक्शन को फ्लिप कर दिया, सो 3/4² इट इज़ 9/16। ऑलराइट, आफ्टर दैट 16 टू द पावर 1/2 एंड y टू द पावर 6 होल पावर 1/2। 16 पावर 1/2 इट्स 4, y की पावर क्यूब। आंसर। ऑलराइट, सो it's June 2019, 36 power 1/2, that means 6² whole power 1/2, 2 and 2 cancel, it will be 6. 5 power -2, it will be 1/5 power 2, that is 1/25. After that 2 power 8 in 2 power 2 into 8 power 5/3 equals to 2 power k. Alright, so that will be 2 power 2 multiplied by 8 to the power 5/3. ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ 8 अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 की पावर क्यूब, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 पावर क्यूब 8 ही होता है। 3 और 3 कैंसिल हो गया, सो यू गॉट 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 पावर के। अब बेसिस आर सेम, दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर नीड्स टू बी एडेड, तो 2 पावर 7 इक्वल्स टू 2 पावर के, सो यू गॉट द वैल्यू फॉर के, इट इज़ इक्वल्स टू 7। 3 power -2, it will be 1/3 power 2 multiply by 3 power 4, राइट। बल्कि हम इसको यूँ क्यों कर रहे हैं, हम सिंपल इसको ऐसे करते हैं, बेसिस आर सेम, दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर नीड्स टू बी सब एड, सो 4 - 2 it will be 2, that is equals to 9। 3 - 3 power 0, sorry 3
minus 3 power 0 is 1, that will be 2. नेक्स्ट 4y, दोनों पावर हम क्या करेंगे ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/2 प्लस 1/4, 4y, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज 4, सो दैट विल बी 2 + 1, सो आंसर इज 4y 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर आ गया। एनीथिंग विद 0 पावर इज 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का 3 2s are 6, एंड लास्टली नेगेटिव पावर को पहले आपने अपने फ्रैक्शन को फ्लिप किया, x³ डिवाइडेड बाय 8 विद द पावर 1/3, पहला स्टेप हो गया। अब आप पावर दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रोवाइड कर दें, 1/3 और ये लिखा हुआ है 8 टू द पावर 1/3। 8 क्या होता है, 8 होता है हमारे पास 2 का क्यूब, कैंसिल हुआ, सो द आंसर इज x डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वी हैड डन पास्ट पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 टिल 2019, और इसमें जितने सवाल हमारे इंडाइसिस के थे हमने ये तकरीबन सारे सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन समझ ना आया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी में स्टैंडर्ड फॉर्म के। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को टच नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।